Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. ما خبر دارم که شما اپلیکیشن لکایی که دو ضرورت دارین. من امروز به خدمت شما حاضر هستم که شما را اپلیکیشن لکایی که دو یاد بدم. اپلیکیشن لکایی که دو مشکل نیست، فقط چند راهنما اصول را ذهن خوبین. اپلیکیشن لکایی که دو برای هر پیشه لازمی شرط است. ضرور پریکٹیس کنین اور این مهارت را حاصل کنین. Okay, now let's go to the lesson. Sick leave application writing in English. Dear students, मैंने the application मशमूलियत में तुम what is an application, format of an application and sample of application. What is the meaning of sick leave application? A sick leave application is a formal request. यानी sick leave application की एक formal request असता है. Dear students, त्याशम भाषा कि sick leave application एक formal letter असता है. यानी एक पारे formal letter असता है. यानी वो formal letter में गुफ्ता में तने चीगा formal letter application letter आर्दिशेगा मगर नाम खाली मुख्तलिफ application और letter असता है. चीगा यानी sick leave application एक formal request असता है. चीगा represents an absence from school or work permitted because of illness. يعني خاطر كي جو قسم من عجوري شمو إجازة ممكن از work خو يا سكول خو بري رخصت. 5-step writing a sick leave application. Number 1, addressing application chida to the principal Dan Idol High School, Koicha, 25th November of 2022. यानी addressing application यानी किशमो दमज़ू नफर किशमो नकाय में खतरा address मन इंतनाम दमज़ू नफर या इदारा की ता स्कूल अस्ता उर्मुगी addressing application. 2. Subject application यानी what is the subject of application या what is the application about. Application द बारे चीज़ अस्ता ठीक है. Subject application for sick leave. Number 3. Application body. Body of the application. Respected sir or madam, I would like to state that I have been suffering from fever since yesterday evening. Therefore, I will not be able to attend the classes today. Kindly grant me leave for one day only. Body of the application यानी body शक्ता है. Fine, main body शक्ता यानी actual message क्या था ये मोगी body of the application या application body. हाँ. Number 4. Thanking note. I shall be grateful to you. यानी शमो thanking note इतने कायने किशु शमो दर्दी favor या दर्दी regard दर्दी मकसद शमोरा शमो request करता बुदिन शमो thanks अदा शुक्रियाश अदा मनेन. Fine. Number 5. Closing application यानी शमो conclusion मनेन application को ख़त्म मनेन ख़त्म मनेन और मुगा closing application. Yours faithfully, name Yusuf Ali, class 7th, section B. Fine. Further पेश माशमोर कनेता techniques और उसल शराब प्रिंसिपल शमोरियात में तुम ठीक है. Format of an application. 7 things in it आप चीज़ बने थी शामिल आता है ठीक है. ये मुगा format of an application यानी form से तो करने स्टोर मालूम मिटा design से तो करने ठीक है. और मुगा format of an application. Number 1. Receiver details. Receiver name, title or description. मने थी स्मॉल application है. दहर कत किर का रही मने उना receiver दत्ता ठीक है. उना मुको receiver address मोगी ठीक है. या मने दो रिसीवर्स नेम है टाइटल या डिस्क्रिप्शन शामिल मने नाल स्मोक टू द प्रिंसिपल रे मने प्रिंसिपल शी दत्ता टाइटल शी दत्ता यानी ओहदे शी दत्ता ठीक है. हाँ. नंबर 2. डेट शामिल किन जर्स्टन कोना एप्लीकेशन की बहुत मोडेट रखने तो आखिरी लिखाई में कर दे मगर आजकल मॉडर्न वाला एप्लीकेशन आता वो कि नता रिसीवर एड्रेस की नता बात माया डेट ठीक है. डेट. Number 3. Subject. What the application is about. Otherwise, subject लिखा है कि इनकी application के बारे चीज़ है. Application for sick leave, application for an urgent piece of work or anything else. ठीक है. Number 4. Salutation. Dear sir or madam, to address the person you are writing to. यानी मु नफर शमो address मनेन द खत लिखा है मनेन और मोगी salutation मोगी ठीक है. यानी आदाब मोगफ्ता में तने. To address the person you are writing to. Number 5. Application body. It shows the aim of writing the letter like reason of taking leave and period of required leave. यानी बने application body शमो लिखाए मनेन letter या application लिखाए ने बने reason को में दिन शर leave में खाएं हो और चखदर leave में खाएं शमो period of
लीव रिक्वायर्ड आता है ठीक है नंबर 1 ए मैंने दिख शामिल इंट्रोडक्शन मैंने इंट्रोडक्शन शमो रीजन खरबुगिन ये खास खरबुगिन फाइन आजू बात किनेता रिजल्ट खरबुगिन ठीक है आजू बात किनेता शमो अब قدر की लीव रिक्वायर्ड दरेन अमर शमो मेंशन मेथनन फाइन बी बॉडी सी कंक्लूजन ठीक है नंबर 6 complementary clause thanking you yours faithfully या yours sincerely ये आर्दू की नेता मैंने closing माया मैंने closing application माया ठीक है complementary clause और designation मैंने दी tender detail माया such as name को लिखा है मैंने फादर्स नेम अगर लिखा है फादर्स नेम रोल नंबर सेक्शन वगैरह या क्लास को लिखा है मैंने एक क्लोजिंग रहता है ठीक है यानी डिजिग्नेशन टेंडर डिटेल्स नाले सैंपल शरत करें 2 इन्हें खोना एप्लीकेशन के लिखाए में करें फाइन लेकिन आजकल की ऐसे वाला लिखाए में हो नाले तो करें देन वाला तो किन और ना वाला एप्लीकेशन आता है ठीक है तो कदर फस्ता माशमर फक्श समझाऊं मनो खूब देन खूब बेलेन ठीक है हाँ 2 बात कामा द प्रिंसिपल कामा स्कूल नेम कामा एड्रेस कामा में ठीक है मगर मैंने नाव वाला इस तो आजकल के एप्लीकेशन लिखाए में कामा या पंक्चुएशन लाजमी है पंक्चुएशन लाजमी है ठीक है 2 दादा तो इंडेंट हम लाजमी नहीं इंची मो इंडेंट में दे इंची इंडेंट जरूरी नहीं है 2 द प्रिंसिपल स्कूल नेम एड्रेस Find out about date 25th of November 2022 November 25th comma 22 ठीक है समझ बात यानी अदद फर्क है कोना वाला एप्लीकेशन बुत और आजकल के एप्लीकेशन लिखा है शामी में दरता मी तरह करता हो सब्जेक्ट सिक लीव एप्लीकेशन सब्जेक्ट रिक्वेस्ट फॉर सिक लीव आता रिस्पेक्टेड सर और मैडम कामा स्टूडेंट दैट्स संभाषण कामा द ब्रिटिश इंग्लिश यूज मस्ता जबकि कॉलन किनेता द अमेरिकन इंग्लिश यूज मस्ता ठीक है अमेरिकन और ब्रिटिश इंग्लिश पर बात फर्क बुफामिन किंची पंक्चुएशन यानी कामा ब्रिटिश इंग्लिश आता हो ब्रिटिश इंग्लिश वाला मार इंजी लिखाई कदम अगर मैं खाइन अमेरिकन इंग्लिश लिखाई कत नहीं है पर कॉलन पे दिन दो नुक्ता पे दिन ठीक है Most respectfully, I beg to say that. Most respectfully, comma, I would like to state that. In it body application आता हाँ initial था closing application yours faithfully comma name class section date yours faithfully name class section ठीक है हाँ हम सैंपल मॉडर्न वाला रखने तब माश मोर समझाओ हम चल ओल्ड वाला इला बिदिन ठीक है हम के नौ तरह का एप्लीकेशन लिखाएं शो और फॉलो करन दमती तरह का शमो एप्लीकेशन खरा सेंड मेथन द स्कूल ठीक है हाँ थ्रू द प्रिंसिपल स्कूल नेम एड्रेस डेट 2 The principal, the child school name within Government Boys High School Hazara Society, कामाना दिन बस, punctuation ना दिन ठीक है, Government Boys High School Hazara Society हो, दोस्ता, त्याशुं बाशत स्कूल के नेम खुदा दिन बस सिटी रा अलग पे दिन फाइन सिटी शरा अलग पे दिन ठीक है यानी एड्रेस आता शमो दम तो प्रिंसिपल क्लेम ने एड्रेस जाता और उसके बाद इन्हीं डेट जाता 25 नवंबर 2022 नवंबर 25 कामा 22 शमो दो तरह का लिखा है मैं 25 नवंबर या नवंबर 25 ये मादा आखिर शमो समझाओ ना हाउ टू राइट द डेट इन इंग्लिश ठीक है अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश डेट लिखा है को तो फर्क दरा हो Subject, sick leave application, subject, application for sick leave, respected sir or madam, most respectfully, I beg to say that, respected sir, madam, most respectfully. I would like to state that I have been suffering from fever and stomach ache since last night. Therefore, I shall not be able to attend the classes. Kindly grant me leave for one day only. I shall be grateful to you. This body of application, initial introduction book or initial supporting details that the आखिर conclusion में ठीक है हाँ closing Yours faithfully, student. Note can find note can कि yours faithfully मो yours sincerely में इस्तेमाल मुने yours truly में इस्तेमाल मुने शमो को दफा yours obediently में इस्तेमाल मुने ठीक है faithfully माश मोर आखिर समझाओ ने चारा faithfully faithfully इस्तेमाल किन time sincerely इस्तेमाल किन time truly इस्तेमाल किन और obediently इस्तेमाल करें ठीक है obediently रखोए इस्तेमाल इस नकिन obediently नमशाई कोना बुदा आलिश डिक्शनरी शामिल नहीं obediently ताल्लुक इस नदरा कद लेटर या कद एप्लीकेशन ताल्लुक इस नदरा obediently इस लिखाए ना करें ठीक है Yours faithfully, name यूसुफ अली class 7 section B इन्हें मेरे बने clothing को शामिल करें ठीक है हाँ तो ना मशमूर डिफरेंसी याद में तो ऐसी बात डिफरेंसी याद में ज़रूर नोट करने कुल लाज़मी आता शायद शमो मिस्टेक मुने इन बने एप्लीकेशन ख़ुन मेरा लिहाजा कोशिश की हमें मिस्टेक रहा दोहराओ ना करें ठीक है
then يعني in the past to comma the principal school name comma address full stop مدادينا now شتوك كان to the principal school name address date توك punctuation نية और date हम देंगे تا लेकिन मैंने देन वाला कि date تا आखिर मोले कायम कदी यानी closing के लिए कायम कदी बता आखिर शमो date مدادي वो old वाला तो old fashioned writing style بتنا لما modern شمو بايد के اختيار كنين خو مثال دي توكن تو كاما the principal أمت public school كاما كويتا full stop إنجي مثال شتوك كان يدي ولا را تو إنجين شم نادرا إنا إنجين درا to the principal أمت public school كويتا 25th November 2022 ठीक है the date in English था فرش رنال समझाओ शमोला अमेरिकन इंग्लिश और ब्रिटिश इंग्लिश द लिखाई को तो तारीख लिखाई को तो फर्क दरा बिल्कुल ज़मीन और आसमान फर्क दरा हो फर्श बाइट नोट किन देन नशीन बेलन शमो بسیار دایم میخوانیم جیتر دا انگلیسی میخوانیم مثلا کنفیوز میشین که امریکن انگلیش یا بریتیش انگلیش نرم شمار برشم کلیر منم تو کن امریکن انگلیش month plus day مایا اول باید month لگایی کن دا امریکن انگلیش تیپ شش دارد تمام تیپ شمار تم جانوش دارد دینشم بیش نباید کنه تو کن لب امریکن منیدی ام تا اینجی month تا امه ما بس اینجی month اول بیدین ادو بعد day را بیدین چیکا month plus day امریکن انگلیش اینمیتر डेट लिखा है हमेशा नवंबर 25 अगर नंबर लिखा है कितने दिन 11 अवल पे दिन नवंबर 25/2022 पे दिन हाँ द ब्रिटिश इंग्लिश अवल डे भी दिन ठीक है मैंने ब्रिटिश इंग्लिश अवल डे भी दिन अगर ही तरम दया चुना माय डे माय डेट बगिना मर समझो हो डेट मैंने से टी शामिल है यानी ब्रिटिश में शखो ब्रिटिश डे प्लस मंथ यानी 25 नवंबर 25 11/22 दया शिम बाशत एनर्जी टी एच इन इंग्लिश टी एच के लिखा है हमेशा द ब्रिटिश इंग्लिश कदी नंबर कदी नंबर ये नंबर की बनश मुख टी एच इजाफा करें ये नंबर खुशी तक कॉर्डिनल नंबर है वक्त मुठी एच इजाफा मनी टी एच आर डी या एन टी शामिल मनी बदिशकार मशा ये ऑर्डिनल नंबर जो मशा ऑर्डिनल नंबर यानी ऑर्डर शमना ऑर्डर ऑफ द डेट शमना ठीक है 25 नवंबर 25 मंथ बदंजी ईयर माया ठीक है सॉरी जी कम मतलब था मैंने लैपटॉप में माशम हो रहे हैं तब दफ़ा दोबारा बरे दिन लैपटॉप मारूं आखिर शेक तना स्लाइड मंदा बता अमर मा बरे शुमात करूंगी जी कम जेम शिदा लैपटॉप में हाँ बबक्शन नाले Do you know the differences? Dear sir, comma, dear madam, comma, dear sir, madam, comma, dear sir or madam, comma. ठीक है डियर मिस्टर अली डियर मिस जॉन डियर मिस मीत डियर मिस मैरी इन तमाम सैल्यूटेशन अब मैंने एप्लीकेशन की मौलिक आयनी सैल्यूटेशन यानी द पर्सन दैट यू आर एड्रेसिंग टू राइट ठीक है हम राइट शमो एड्रेस मैंने लिखाई करनी है इना सैल्यूटेशन आता हो सैल्यूटेशन मैंने दिख तो कने डियर सर मैडम इना कने तन मोना अदनाम शमो खातिब ना मने ना अदनाम शे एड्रेस ना मने हम तो खातिब द लास्ट एप्लीकेशन के शमो क्लोजिंग की मने ना यानी कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज के लिखाई मने उन चीज शमो बस योर्स फेथफुली लिखाई की योर्स फेथफुली बराए अदनाले लिखाई की मखशमो सैल्यूटेशन है डियर सर डियर मैडम या डियर सर और मैडम के लिखाई आखिर योर्स फेथफुली भी दिन योर्स फेथफुली बरे इम्तना लिखायम शरा एट द एंड ऑफ लेक्चर लिखायम के शमुक नाम शरा ना मिग्रेन ठीक शो या नाम शरा मैंने सैल्यूटेशन शामिल नहीं है तो बदर योर फेथफुली भी देखो हाँ डियर मिस्टर अली डियर मिस जॉन डियर मिस स्मिथ डियर मिसिस मैरी इन तमाम सैल्यूटेशन तो मैंने नाम शामिल लगता है नशमो नाम से मुखातिब कर दे बट आखिर से मैंने कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज रखने था योर सिंसियरली कामा या सिंसियरली योर बिदिन या तना सिंसियरली हम बिदिन कामा ठीक है यानी सिंसियरली योर सिंसियरली वाला रहा उठाए में इस्तेमाल किन वक्त अगर शमो सैल्यूटेशन शो मैंने कतनाम एड्रेस कर बुदिन बस बायत योर सिंसियरली लिखाई कि नहीं फर्क था फेथफुली कद योर सिंसियरली में फर्क लेकिन योर सुलेरा बड़े जनरल इस्तेमाल किन चाहे कि कतनाम से मुखातिब मुनिन या चाहे कतनाम से मुखातिब ना मुनिन बल्कि कटाइचल से मुखातिब निन और अमर लेखा कनें ठीक शोद मतलब योर सिंसियरली बाद काम आया सिंसियरली योर बाद हम काम आया शमोतना सिंसियरली हम लिखाएं नोट त्याशिम भाषा तो मिस्टेक ना करें अवलना लेटर कैपिटल बिदिन और अपोस्ट्रोफी कदियो मने योर शामिल न किन दोबारा बशकिन अवलना लेटर मने योर का कैपिटल बिदिन और अपोस्ट्रोफी न दिन बाद एस बिदिन तना बगैर एसम नाम से योर सिंसियरली ना योर सिंसियरली हो
उम्मीद मनम डियर स्टूडेंट्स उम्मीद मनम sama मादा जरूर प्रैक्टिस करन because practice makes perfect. Tashakkur. Thanks for watching. Khuda Hafiz.